Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great Vaheguru, let us start our today's topic. Our today's topic is crystal structures. Our today's topic is crystal structure. Okay, this is basically a new chapter. This is basically a new chapter. But before going to discuss the crystal structure, I would just like to recall the basics of the solids. Okay. In the lower classes, you might have read that solids are of two types. One is called a crystalline solid, another is called a amorphous solid. Can you tell me what is the meaning of crystalline solid? What is crystalline solid? What is crystalline solid and what is a amorphous solid? Crystalline solids are those solids which possesses a regular arrangement of atoms. Regular arrangement of atoms. Okay, which possesses the regular arrangement of atoms is called a crystalline solids. The second type is amorphous solid. Can you tell me what is the meaning of amorphous solid? Please, which are? What do you mean by isotropic? Please write. Which basically the basic definition is which amorphous solids are solid which does not possess the regular arrangement of atoms. So please write the amorphous solids. The amorphous solids are the solids which do not have regular arrangement of atoms. Which do not have regular arrangement of atoms. Which do not have regular arrangement of atoms. Second point, amorphous solids are generally referred to as generally referred to as glass. Generally referred to as glass. Generally referred to as glass because they have features similar to glass. Third point, the physical properties of amorphous solids. The physical properties of amorphous solids are not dependent upon, please use the red pen, are not dependent on direction of measurement. And therefore they are called isotropic substances. What do you mean by isotropic? See, iso means break, iso means same. तो इसका मतलब क्या होगा? This simply means that इसका मतलब ये होगा कि इसमें कुछ ना कुछ सेम होगा. इसमें क्या होगा? I mean to say they are not directional dependent. मान लो एक कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है टेम्परेचर. अगर इस डायरेक्शन में जाओगे या किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो. इसका मतलब क्या है? वो क्या है? आइसोट्रॉपिक. ठीक है? दे आर नॉट डायरेक्शनल डिपेंडेंट. इफ यू मूव इन दिस डायरेक्शन टेम्परेचर इज सेम. यू मूव इन दिस डायरेक्शन टेम्परेचर इज सेम. इफ देयर इज you move in this direction is same. This means that they attain the property of isotropic. अगर isotropic नहीं होगा तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग होगी, टेम्परेचर अलग होगा, इसमें क्या होगा? अलग होगा. Getting the point? So they are directional dependent. But in this particular case, they are not supposed to be directional dependent. Okay. So this is the basic property of amorphous solid.
Now please write what is space lattice, which is most important. Space lattice. Space lattice. Lattice का मतलब क्या होता है? Space का मतलब क्या होता है? Space. Space means जगह. Lattice का मतलब स्ट्रक्चर. ठीक है? स्पेस लैटिस. ठीक है, तो लिखिए, पहले एक लाइन लिख लीजिए. ए रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. ए रेगुलर एंड पीरियोडिक. पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को रिपीट करता है, जो अपने आप को आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या करता है? रिपीट करता है. ठीक है, रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट of atoms. A regular and periodic arrangement of atoms is the most important feature. Is the most important feature of the crystals. Of the crystals. ये स्ट्रक्चर लगाइए बेटा. डॉट्स को बोलते हैं, these dots are called lattice points. These dots are called lattice points. Please make the figure. ठीक है, ठीक है. तो आप देख रहे हैं रेगुलर अरेंजमेंट है ना. These are called the lattice points. These are called lattice points. So please write it is the arrangement of. Use the red pen. Second point. Write with the red pen. It is the arrangement of. It is the arrangement of infinite number of imaginary points. These are imaginary points. It is the arrangement of infinite number of. It is the arrangement of infinite number of imaginary points. It is the arrangement of infinite number of lattice points in the space. In the space where each point have identical surroundings. Identical surroundings or environment. Identical surroundings or environment. It is the arrangement of infinite number of lattice points. It is the arrangement of infinite number of lattice points in the space where each point have identical surroundings. So these lattice points are imaginary points. These are the imaginary points or virtual points or virtual points. Okay, and they are arranged in a regular manner. They are arranged in a regular and periodic manner, and each point have the identical surrounding. So this makes a space lattice. This makes a space lattice. लिखिए, next point लिखिए. The actual arrangement of atoms is called. The actual arrangement of atoms. The actual arrangement of atoms is called structure. Is called structure. The actual arrangement of atoms is called structure. Suppose the atoms are
cluster of atoms, suppose the atom or cluster of atoms in a crystal are represented by points, and we obtain a regular arrangement or distribution of points repeat करता हूँ. Suppose the atoms or cluster of atoms in a crystal are represented by the points, and we obtain a regular distribution of points in space, and these points are called lattice points or lattice sites. These points are called lattice points or lattice sites. These points are called lattice points and lattice sites. Okay. The three-dimensional network 3D में क्या बन जाएगा? The three-dimensional network of the regularly arranged points is known as space lattice. The three-dimensional network of regularly arranged points. three-dimensional में, ठीक है? The three-dimensional network of regularly arranged points is known as a space lattice. ओके. हमारे पास कई तरह का लैटिस हो सकता है. हमारे पास स्क्वायर लैटिस हो सकता है, हमारे पास रेक्टेंगल लैटिस हो सकता है. कैन यू मेक अ स्क्वायर लैटिस? Let us make a square lattice. बनाते हैं. Let us make a space lattice. क्या होगा? एक जनरल space lattice क्या होगा? एक जनरल डेफिनेशन होगी. Let us make a square lattice. बनाइए स्क्वायर लैटिस. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? What do you mean by square? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? All sides are same. So see this lattice point. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So this figure is a square lattice. This figure is a square lattice. Now let us make a rectangle lattice. रेक्टेंगल में कैसा होगा? रेक्टेंगल लैटिस. रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? क्या बात होगी? रेक्टेंगल लैटिस लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ. इसका मतलब क्या होगा? लेंथ की साइड क्या होगा? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So this is the example of a rectangle lattice. This is the example of a rectangle lattice. This is the example of square lattice. This is the example of a rectangle lattice. समझ आया आपको? देखो लेंथ में लैटिस पॉइंट्स क्या है? ज्यादा. ब्रेड्थ में क्या है? कम. स्क्वायर में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पॉइंट्स along the length side is equal to number of points along the breadth side. So both are same in the square lattice. Where in case of rectangle lattice the points are different. Points are different. Okay. The length points are different from the breadth points. Can you make a hexagonal lattice? आप hexagonal बना सकते हो? Hexagonal lattice बना सकते हो आप? Hexagonal lattice
हेक्सा का मतलब क्या होता है? हेक्सा मींस 6, हेक्सा मींस 6। तो हेक्सागोनल होती कैसी है? कैसी होती है ना? दिस इज कॉल्ड अ रेगुलर हेक्सागोनल। दिस इज कॉल्ड अ रेगुलर हेक्सागोनल। रेगुलर मींस ऑल साइड्स आर सेम। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो कैन यू मेक अरेंजमेंट फ्रॉम द लैटिस पॉइंट्स? बना के दिखाइए जरा, कैसे बनाओगे आप? मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले रो में आप बनाइए 6 लैटिस पॉइंट दिखाइए, अगली रो में 5, फिर 4 3 2 1। तो वहां से हेक्सागोनल लैटिस बना के दिखाइए, हेक्सागोनल लैटिस बना के दिखाइए। बनाइए। Hexagonal, please make the hexagonal lattice. Okay, do from yourself, ठीक है? We will discuss it tomorrow. आगे बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। आगे बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। What is crystal structure? What is crystal structure? What is crystal structure? But before going to discuss the crystal structure, I would like to discuss the what is basis. What is a basis? What is basis? Please write what is basis. Please write what is basis. What is basis? What is basis? So please write. Basis is collection of atoms. Basis is a collection of atoms. Basis is a collection of atoms. Basis is a collection of atoms. Now what is crystal structure? Simple definition is crystal structure means space lattice plus basis arrow crystal structure. The combination of space lattice, the combination of the space lattice plus basis forms a crystal structure. Form a crystal structure. Okay. Basis के मैंने क्या बताया? हमने क्या बताया? Basis is a collection of atoms. Okay. Now let us make a space lattice. तो space lattice हम कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. So this is nothing but a space lattice. It is a regular and periodic arrangement of the lattice points. Okay, so these are the space lattice. Plus basis, I will add basis. Let us say this is atom, this is our atom. Okay, if there is a one atom per lattice, there is a one atom per lattice point, that is called a monatomic crystal. That will form a mono. If I will write here one atom per lattice points, one atom per lattice point, तो वो क्या होता है? मोनोटॉमिक. मोनो मीन्स सिंगल, मोनोटॉमिक क्रिस्टल. If there are two atoms per lattice point, तो वो क्या होगा? Diatomic. That will be a diatomic crystal. That will be a diatomic crystal. So let us make a monatomic crystal first. Let us make a monatomic crystal. तो क्या होगा? ये जो this is called a basis. This is called a basis. तो एक ही एटम है ना? बेसिस में एक ही एटम है. एक एटम कहाँ पे लग जाएगा?
this one atom will be connected to the all lattice points. This one atom will be connected to all lattice points to make a monoatomic crystal. तो ये कैसा बन जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 तो ऐसा बन जाएगा। इसके साथ अटैच हो गया ना। ये क्या बना हमारा? मोनो एटॉमिक क्रिस्टल। तो ये वाला क्या बन गया? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हमारा क्या बन गया? ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हमारा? मोनोटॉमिक। क्या बना? मोनोटॉमिक। तो सी बेसिस पे कितने एटम्स हैं? 1। बेसिस इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स। सो सी वी हैव ओनली 1 एटम्स। If there is a one atom per lattice point, तो ये एटम क्या लग जाएगा? It will be connected to all lattice points. तो ये ऐसा फिगर बन जाएगा, which is called a monoatomic crystal. तो बना लीजिए इसको monoatomic crystal. This is example of monoatomic. Monoatomic crystal. The general definition is crystal structure is a space lattice plus lattice, space lattice plus basis, space lattice plus basis forms a crystal structure. अब crystal structure कई तरह के हो सकते हैं, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, काफी तरह के हो सकते हैं ना। ठीक है, तो मोनोटॉमिक क्रिस्टल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो लिखिए कौन कौन से एग्जांपल होते हैं मोनोटॉमिक के। इसमें एक एटम हो, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम। दूसरा आयरन, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड। These are the examples of the monoatomic crystals. सोडियम, आयरन, इसका मतलब ये एटम किसका हो सकता है? It can be of copper, it can be of sodium, it can be of iron, it can be of copper, it can be of gold. Or it can be also be called as a silver. ठीक है, उसमें भी सिंगल एटम नहीं है। ठीक है, बना लिया? Are you getting this? Joseph, Benedict, are you getting this? See, we have a one monoatomic means we have a one atom per lattice point. We have a one atom per lattice point. This is same as just like we are distributing a burger. We are distributing a burger to the students. If there is a one burger, if we distribute a one burger to each student, that is called a monoatomic burger, mono burger. Okay. अगर एक बच्चे को 2 बर्गर दिए जाए, if you suppose distribute 2 burger to each student, then that will be a dia. If 3 burgers, tria. 4 एक बर्गर देंगे तो मोनो हो जाएगा, 2 देंगे तो डाया हो जाएगा, 3 देंगे तो ट्राया, 4 देंगे तो टेट्रा। तो प्लीज मेक अ नेक्स्ट विल डू अ डायटोमिक। प्लीज मेक अ फिगर ऑफ डायटोमिक क्रिस्टल। प्लीज मेक अ फिगर ऑफ अ डायटोमिक क्रिस्टल। बनाइए। डायटोमिक में कैसा होगा? डायटोमिक में कितने एटम्स होंगे? 2। डायटोमिक क्रिस्टल। डाया मीन्स 2, मोनो मीन्स। सबसे पहला काम क्या है हमारा? स्पेस लैटिस। सबसे पहला हमारा काम क्या है? वी हैव टू मेक अ स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस इज नथिंग, इट इज अ
regular and periodic arrangement of atoms in the space. So these are imaginary points. These are the imaginary points, virtual points. This is a space that is लास्ट बेसिस. हमारी बेसिस कैसी होगी? कैसी होगी बेसिस हमारी? कैसी होगी? दो एटम्स. क्या होगी? दो एटम. तो ऐसी होगी. This is a basis. This is a basis. This is a two atoms. This is a two atoms. Okay. One is represented by dot. Another is represented by a hole. Okay. What will happen? इसका डॉट शो चूज कर दो. हाँ जी, कैसा बनेगा? 1 2 पहले लेटिस पॉइंट बना लेते हैं. 3 4 1 2 3. ठीक बना रहा हूं मैं? ठीक बना रहा हूं? देखना, चेक करना. ठीक है. 1 2 3 4 1 2 3 4. Now what will happen? This bases will connect to these lattice points. Now please do by yourself. कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं इसके साथ ठीक है, ये शो कर दिया. ये क्या कर दिया हमने? शो. देयर आर टू एटम्स. देयर आर टू एटम्स. तो इस तरह से आप सारों के साथ शो कर दीजिए. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. And you can show like this. So this is the crystal structure of two dimension, and it is called a diatomic crystal. These are diatomic crystal. So ठीक है, एक लेटिस पॉइंट है, उसके साथ क्या है? एक लेटिस पॉइंट है, दूसरा क्या है उसके साथ? दो एटम्स है. क्या है? दो एटम्स. डायटोमिक क्रिस्टल. ठीक है. कुछ बुक्स ऐसे लिखती है, कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिख देती हैं, एक ऐसे भी लिख देती है. तो अलग अलग तरीका है. ठीक है, अलग अलग तरीका है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का. ठीक है. हम इसको ऐसे, कुछ बुक्स ऐसे लिखेगी, देखना ऐसे 1 2 1 2 1 2. So this is example of diatomic. और मोनो में कैसे होगा? मोनो में ये लेटिस पॉइंट है 1 1 1 1. So this is a मोनो. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? सिंपल है काफी. So that is called a monotopic. This is called figure 1. This is called figure 2. Figure 2 represents the diatomic crystal and figure 1 represents the monatomic crystal. So please write the examples. The diatomic crystals are sodium chloride. Sodium chloride. कौन सा हुआ बेटा? सोडियम क्लोराइड. तो कैसे? एक एटम सोडियम का, दूसरा एटम क्लोराइड. वन एटम डायटोमिक मीन्स वन एटम
is from the sodium and another atom is from the chloride. Okay, sodium chloride. दूसरा cesium chloride, cesium CaCl. तीसरा डायमंड, चाल मारे आप ध्यान दो इधर. ये सारा 3 dimensions network का. It's very difficult, sometimes it is very difficult to imagine. You have to imagine the things. 3 dimension में क्या होता है कि we cannot draw the 3 dimensional objects into the 2 dimensional paper or a blackboard. तीसरी dimension छुपी रहती है, तो आपकी imagination power ज़्यादा होनी चाहिए कि you have to imagine or think the 3 dimensional structure. Okay? समझ आएगी नहीं आएगी? नोट लिखिए. If there are 3 atoms at the lattice point, if there are 3 atoms at the lattice point, if there are 3 atoms at the lattice points, then it is called a triatomic. Triatomic. 2 से लेके 2, 3, 4, 5 से लेके 100 तक बना सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या बन जाता है बाद में? पॉलीमर भी बन जाता है. क्या बन जाता है? पॉलीमर. पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पढ़ा ना क्वेश्चन में आपने. n नंबर ऑफ एटम्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. ठीक है, तो पॉलीमर बन जाते हैं. जैसे कपड़े हैं हमारे पॉली, ठीक है ना, पॉलीमराइजेशन से बनते हैं पॉलीमर्स. ठीक है, व्हाट इज टाइम? हो गया, हो गया. So this is all about the this is all about the solids. This is all about the crystal structure, and this is all about the basis, and it is all about the space lattice. Sorry, this is all about the space lattice, basis, and a crystal structure. What is space lattice? It is a collection of points. It's a collection of the points or lattice points. Collection of the lattice points. What is basis? It consists of atoms. ठीक है, and space lattice plus basis forms a crystal structure. Crystal structure. It can be a monatomic, it can be a diatomic, it can be a. Thank you so much. Thank you.